Hello. Good afternoon, everyone. Today we are going to learn the next point that is based over the interrupt. Okay. Last lecture we have seen how to interface a 7 segment display with ARM7. Now again I am going to continue the same point but using interrupt signal. Okay, means we are going to interface the 7 segment display. Now in the main routine we have written the program for displaying the data over the 7 segment. Now we are taking the help of interrupt signal, that is general purpose interrupt request signal, IRQ, right? So question is here, how you can introduce that interrupt signals. चलो यहाँ पर डायग्राम देखते हैं पहले, इंटरफेसिंग डायग्राम. ओके, तो इंटरफेसिंग डायग्राम जो लास्ट लेक्चर में थी वही सेम इंटरफेसिंग डायग्राम है. यहाँ आपको 7 segment जो इंटरफेस किया है वह आपको पोर्ट 1 के 16 से लेकर 23rd लाइन तक, 22nd लाइन तक या 23rd लाइन तक वो इंटरफेस किया है, राइट? एज इट इज ही पूरा सर्किट है, बस खाली इसमें आपको एक जो बॉटम साइड में इंटरप्ट्स दिखाई दे रहा है वहां पर एक स्विच है. तो ये सर्किट यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस हुआ है. अगर आप लास्ट वीडियो और इस वीडियो में कंपेयर करोगे तो सर्किट एग्जैक्टली सेम है, ओनली यहाँ पर हम पिन नंबर 41 को यहाँ एक एक्सटर्नल स्विच कनेक्ट कर रहे हैं. उसका नाम है स्विच का इंटरप्ट सिग्नल. ओके, तो ये इंटरप्ट सिग्नल को यहाँ आप यूज करने वाले हो. So that's why this signal is generated by the external switch, that is SW5. Okay, this switch is connected with R5 register and ground. Okay, 3.3 volt is applied to that register. Okay, and a capacitance is connected across this switch. Okay, for elimination of debouncing effect, right? So that's why here this switch will be pressed or released by you to generate the interrupt signal. Okay, तो एक्सपेरिमेंट बहुत सारा सिंपल है, इसमें कोई यहाँ पर ज्यादा ट्रिकी नहीं है. ओके, एकदम आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ एक ही यहाँ आपको यूज करना है, डिटेक्शन ऑफ इंटरप्ट. ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम इंटरप्ट कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ स्टैंडर्ड कुछ जो फंक्शंस है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ओके, तो वह स्टैंडर्ड कीवर्ड और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनका यूज करके हम यहाँ प्रोग्राम राइट करने वाले हैं. ओके, तो प्रोग्राम का नाम रहेगा इंटरफेस 7 segment डिस्प्ले यूजिंग जनरल पर्पज और इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल. ओके, तो सर्किट आपके सामने है यहाँ पर. ओके, चलिए मैं यहाँ पर अभी पहले आपको हायरार्की यहाँ पर समझा देता हूँ. ओके, प्रोग्राम कैसा आप लिखोगे, तो प्रोग्राम की हायरार्की आपकी रहेगी. ओके, तो आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे इंस्ट्रक्शन 1 से, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, ये आपका मेन प्रोग्राम रहेगा. जैसे ही आप यहाँ पर कोई यूजर स्विच को एक्सटर्नली प्रेस करेगा तो वहां जनरेशन ऑफ इंटरप्ट हो जाएगा. So whenever user will press a switch, interrupt is generated, and as the interrupt is generated, immediately the controller will go over the interrupt routine. Okay, so that's why immediately the microcontroller will goes from instruction 4 to the interrupt instruction 1. Okay, so that's why it is going to execute the interrupt routine, right? So that's why interrupt routine will be called as soon as the controller will detect an interrupt, right? So here we will see it theoretically how that interrupt will that registers everything. Okay, I already given you idea in the interrupts point. Okay, so here I am directly continuing with this. So that's why as you are going over the interrupt routine, immediately the interrupt instruction 1, 2, 3 and 4 will be get executed. Once your program of interrupt routine will be finished,
Okay, so that's why who will brings you from the interrupt routine to the main program, or who will transfer you from interrupt occurred from that main program to the interrupt routine. Okay, so that's why here sort of functions are utilized. So I will give you idea about that. Okay, one by one I am telling you everything, right? Now question is here, as you look this circuit, so that's why here you want to handle the two things. First one is the 7 segment and second one is the switch. So that's why we need to write the code for port direction selections. Okay, so that's why we need to write the IODR register. So that's why question is here, how you will generate that code. Okay, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कोड जनरेशन के ऊपर लेकर जा रहा हूँ. सो दैट्स वाई हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे पिन डिक्लेरेशन. ओके, तो मुझे यहाँ पर इस तरह का कोड चाहिए है. ओके, मुझे यहाँ पर इस तरह का कोड यहाँ पर इसलिए चाहिए है. ओके, क्योंकि मुझे यहाँ जो 7 सेगमेंट कनेक्टेड है और 7 सेगमेंट को मुझे एज अ डाटा भेजना है. तो माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा आपको डाटा भेजना अगर होगा, सो दैट्स वाई you need to enable the ports of ARM7 and output mode. So that's why I'm going to enable pin number 16 to 23 as output line of port 1. Okay, so that's why here A0 to A31 line are shown. Okay, A0 to A31 line are shown in the table. I am grouping it in the 4 bits. Okay, so that's why A0 to A3, A4 to A7, A8 to A11 and so on are kept in 4-bit fashion. Okay. Now pin number 16 to 23 is required. Okay, I need to keep it as an output line, so that's why I must put a logic 1 bit over that. So that's why logic 1 bit will permits me to keep that port line as an output line. Okay, we can able to transfer our data to the external world. Okay, whatever 7 segment we will interface, over that we will send our data. So that's why pin number 16 to 23 are 1 and remaining lines are 0. Now second thing that I want to tell you here, okay, we are going to handle one interrupt signal. Okay, so that's why remember here that interrupt switch is get connected externally. So that's why that switch is available over the pin number 29th. Okay, so that's why पोर्ट 1 के पिन नंबर पिन नंबर 29 के ऊपर वह स्विच कनेक्टेड रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई मस्ट कीप इट एज एन इनपुट. ओके, so that's why I must here. Okay, so that's why I am putting it as an input signal. Okay, so that's why अभी मुझे यहाँ पर input signal यहाँ पर put out करना है. so इस वजह से मैं यहाँ पर उसे logic 1 पुट आउट कर रहा हूँ. ओके, मुझे उसे रिसीव करना है सिग्नल. ओके, सो दैट्स व्हाई मुझे वहां पर मैं उसकी पिन सेलेक्ट की. रिमेंबर मैं यहाँ पर IODR के द्वारा उसे एनेबल नहीं करूंगा, पिन सेलेक्ट के द्वारा उसे एनेबल करूंगा. सो दैट्स व्हाई मैं उसे एज अ इनपुट या एज अ आउटपुट मैं उसे यूज कर सकूंगा. सो दैट्स व्हाई आई मस्ट नीड टू एनेबल दैट लाइन. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ लॉजिक 1 बिट हियर. ओके, मैं यहाँ पर IODR में यह कोड नहीं पुट आउट करने वाला हूँ, याद रखिए. यानी मुझे यहाँ इनपुट और आउटपुट लाइन यहाँ पर वह पिन नंबर 29 लाइन चाहिए है. सो आई नीड टू रीड इट दैट लाइन. सो दैट्स व्हाई रीड करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर PINACL का यूज करूंगा और उसके द्वारा मैं उसे सेलेक्ट करके उसे रीड करने वाला हूँ. सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ उसे पुट आउट कर रहा हूँ लॉजिक 1 बिट और मेरा कोड रहेगा यहाँ पर 2000000. ओके, इस तरह का कोड मैं PINACL1 में पुट आउट करूंगा. राइट, सो इस तरह के दो थिंग्स मुझे यहाँ पर आपको शो आउट करने थे कि मैं ये यूज करने वाला हूँ. ओके, बाकी ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट में ही बताया है. इस तरह का लुकअप टेबल हम लेने वाले हैं.
इस लुकअप टेबल में पिन नंबर 16 से लेकर 23rd लाइन यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी और डीपी तक कनेक्टेड है। मैं अगर जीरो बिट यहाँ पर जीरो मैं अगर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मेरा इक्विवेलेंट कोड रहेगा यहाँ पर जीरो डिस्प्ले करने के लिए 3F, वन डिस्प्ले करना है तो 06, टू डिस्प्ले करना है तो 5B। I hope this will be known to you. Okay, so that's why I think it is not necessary because last video में मैंने already यहाँ पर इस लुकअप टेबल के बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए मैं यहाँ पर वह थिंग्स यहाँ रिपीट भी किए हैं। अगर आपको जीरो डिस्प्ले करना है तो जीरो डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ एलईडी ग्लो करने पड़ेंगे और जी और डीपी ऑफ रखना पड़ेगा। इस वजह से मुझे कोड मिलेगा 3F। ओके, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वही स्लाइड यहाँ पर रिपीट भी की। ओके, तो आपको इस तरह का लुकअप टेबल भी मिलेगा। लुकअप टेबल के द्वारा आप यहाँ यह कोड फाइंड आउट किए फ्रॉम 0 to F। ओके, तो अभी मैं यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अभी डायरेक्टली आपको यहाँ प्रोग्रामिंग यहाँ पर कैसे लिखनी है यह बता रहा हूँ। ओके, चलिए अभी यहाँ पर एक एक लाइन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हर लाइन का यूज क्या है और आप यहाँ उसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो हैश इंक्लूड boot.h। ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू यूज component switch from the board which is externally available from the micro controller। ओके, सो दैट्स व्हाई ARM7 जो है वो ARM7 के बाहर का अगर आप बोर्ड अगर देख रहे हो तो बोर्ड के ऊपर का कोई भी कंपोनेंट अगर आपको हैंडल करना होगा, so in that situation you need to define, you need to declare board.h because there is a standard library available for that different components which are available on the board। okay, so that's why here आप अगर कोई वहां पर अगर दूसरे कंपोनेंट भी अगर हैंडल करने जाओगे तो आपको वहां इस board.h फाइल को डिक्लेयर करना जरूरी रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई board.h में आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स वहां अवेलेबल रहेगी। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू इंक्लूड board.h। सेकंड इज दैट हैश इंक्लूड lpc21xx.h। ओके, दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल इज नेसेसरी फॉर द ARM7। whatever ARM7 that LPC2148 that we are going to select, okay, library and header file are available in that header file, right? Now if you read the third line, this is a function declared by us। okay, so that's why its name is void ISR handler EXTINT3, okay, round bracket underscore attribute underscore interrupt in round bracket। okay, डबल कोट में आपको वहां पर दिखाई देगा IRQ। okay, now here this particular function is written for handling of the interrupt routine, that is general purpose interrupt routine IRQ। okay, now I am going to explain this, okay, one by one। okay, इस रूटीन में हम यहाँ पर्टिकुलर इस 7 सेगमेंट का जो कोड है वह 7 सेगमेंट का कोड वहां पर राइट करेंगे। मींस व्हाटएवर द डाटा व्हिच वांट टू डिस्प्ले ओवर द 7 सेगमेंट दैट आई विल राइट इन दिस फंक्शन। ओके, दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो इन दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन आई विल राइट related to that 7 segment, but this user defined function will be named as an IRQ, so that's why this function will get called only when interrupt will get occurs, okay, or when the interrupt is enabled, that time this routine will get called। okay, so in this way here this will be the routine of interrupt service routine। okay, this will be the routine written for interrupt service routine। okay, now before explaining this, first of all I will complete the delay routine। okay, so that's why void delay in round bracket। now here initially delay routine is along with their body is given। okay, so no need to write it the same code again in the bottom side, so that's why here void delay round bracket and this function
function will be written in curly braces. Okay, int x file x while x is greater than 0, x minus minus. Okay, the same code will be repeated here from last two experiments. So that's why I hope it is not necessary to tell you here this code. Okay, because here I hope you are aware with this code. Okay, so just remember this code is used for introduction of daily routines. Okay, so that's why whenever we are going to display a digit over the 7 segment, at that time the daily routine will keep that number or that code over that 7 segment for the some amount of the time. So for that point of view here, this daily routine is introduced, right? Now, to continue with this here, now I am going to explain you that ISR handler external interrupt 3. Okay. Now here this routine is like this. Okay. Open the curly brace. Okay. Then star axt int is equal to 0x and 8. Okay. 0x8. Right. This will be the number is given for external interrupt. Now question is here. What is meant by EXTINT? Okay, EXTINT is an external interrupt. Okay, so that's why we are going to handle this external interrupt. Okay, and star is given because such a interrupt is physically present with the ARM7. So that's why to point out or to declare that particular interrupt of this ARM7, we are going to write a code that is 0x8. Okay, 8 is a number of that interrupt routine. Okay, so that's why IRQ will be enabled only when 8 will be given. Okay, so that's why this code is necessary for declaration of that interrupt routine. Okay, now next one statement is here q underscore printf in a round bracket डबल कोट में आपको वहां पर लिखा है एक्सटर्नल इंटरप्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई नाउ क्वेश्चन इज हियर why this q underscore printf is given. Okay, now remember, listen carefully. Q underscore printf is used for sending the message, that is external interrupt will be the message, that message will be sent over the hyper terminal, right? Now question is again, what is a hyper terminal? Actually in Windows, okay, operating system, whenever you are going to interface ARM7 board with your laptop or desktop, then most cases we will see our routine execution over the computer or laptop with the help of such q underscore printf statement. This q underscore printf statement will print this message as soon as the microcontroller is going to execute this routine. Okay, so that's why at the beginning and at the end of the routine I have written such messages. So that's why I know, I will understand, or the programmer or the designer will understand that now the controller, actually the controller is going to handle the routine, okay, or the controller is going to execute the program, okay, and which code is going to executed by the processor. Okay, so for that here as soon as the processor enters into the interrupt routine, so at the beginning mark point of view here I have written external interrupt. Okay, and at the end of routine, okay, just I am showing you here. Okay, in the next one slide. Okay, at last or end of the routine, again I have written the message that q underscore printf, press the switch again to execute the same routine. Okay, so that's why this particular q underscore printf will be the last statement of the routine. Okay,
and here we have given a text that press the switch again. This message or this text is given because now the processor has completed interrupt service routine, and now processor is going over the main routine. Okay, so that's why to understand, okay, or to giving or to show you this activity of the processor. Okay, so this particular type of statement are introduced by me. Okay, so here we are I'm in the practical demonstration I will show you how you can use this uh, hyperterminal messaging. Okay, at this moment just I have explained you theoretically, but at the time of practical I will show you practically. Okay, now the remaining code means whatever the code is starting from the star IO clear one, okay, a star IO set one and delay. Okay, this routine, okay, is already I explain you in the last experiment. Okay, it is used for displaying the data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, okay, H and DP. Okay, so all these, okay, all these code already we have learned in the last experiment, last video. Okay, I told you the meaning of this. Okay, so this particular code is necessary for displaying our data. Okay, so in the routine, okay, जो मैं यहाँ पर ये routine show कर रहा हूँ, ये पहला slide है. Okay, इस पहले slide में ये routine start हुआ है. Wide ISR handler HT INT3 यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, ये पहला स्लाइड. मैं स्विच कर रहा हूँ सेकंड स्लाइड के ऊपर. ओके, सेकंड स्लाइड के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 9. थर्ड स्लाइड के ऊपर ए बी सी डी ई एफ एंड फोर्थ स्लाइड के ऊपर एच और डीपी. यहाँ तक आपको जो कोड यहाँ एक्सप्लेन किया है. ओके, यहाँ ये जो लास्ट डिले है, ये डिले तक आपका कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा इंटरप्ट के द्वारा. और लास्टली जैसे ही आपका ये इंटरप्ट रूटीन फिनिश होगा तो यहाँ एक फ्लैग यहाँ पर डिफाइन किया है, जो डिक्लेयर किया है. इस फ्लैग का नाम है यहाँ पर VIC VECT ADDR is equal to 0. Okay, so this particular code is written because here we have successfully completed the execution of interrupt service routine. Okay, so that's why here when you exit from this routine, this bit will go 0, but when you enter in this routine, that time this code, this particular flag will be 1. And then and only then the processor will enter in the service routine. Right? So that's why, okay, I'm going to give you a clear idea about this register, what this register is. Okay, so see, okay, now which register I am going to use in the program. Okay, so these registers are listed in this slide. Okay, I am telling you here one by one. Okay, so that's why first one is VIC VECT address 0. So that's why vector address register. Okay, it is this is a different and single register and must not be confused with vector address register. Okay, it is a read or write register, and when the data is read from this register, it returns address of ISR. Writing a value to this register, it indicates that the VIC, that the execution of current interrupt is finished, right? Hence, this register is written with a dummy value at the end of ISR to indicate the end of execution, right? So always it is written at the end of the so that's why such register will be informing you or indicating you that this will be the end of ISR routine executions. Okay, getting the clear idea with this explanation. Okay, now again I am going for the next one. Okay, now here
one another routine is written like a wide IRQ in it. Okay, so here it is an interrupt request routine initializations. Okay, so here near about 5 statements are written in this routine. Okay, like the star PIN SCL1 star ext mode and so on. Okay, total 5 statements are written here. Okay, I am telling you here one by one what is the use of these statements and why it is necessary. Okay, so statement is already explained you. I explained you in the first slide. Okay, so here as you are going to connect a switch. Okay, so that's why that switch is linked or that is connected with that particular terminal. Okay, that is pin number 29. So, okay, so that's why that 29th will be enabled with the help of this code. So that's why star PIN SCL1 is equal to 0x2 0000000. Okay, so that's why here एक second. Okay, now the next one is external ext mode. Okay, so that's why here ext mode is that is a 0x8, right? जो आपने एक्सटर्नल टर्मिनल वहां कनेक्ट की है तो उसका पर्टिकुलर जो इंटरप्ट है वह IRQ रहेगा. सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर इंटरप्ट को एनेबल करने के लिए हम ext मोड यहाँ यूज करते हैं, राइट? थर्ड इज दैट VIC VECT ADDR0. ओके, जो हमने ऑलरेडी देखा. ओके, यह जो है यह डिफाइन किया है इज इक्वल टू unsigned int ISR handler ext int3. Okay, so this will brings logic 1 here. Okay, so here when you are going to initialize this IRQ, okay, that time this particular interrupt routine will get called and here logic 1 bit will get put in this VIC VCT address 0 is equal to. So here once it is available, okay, once it is in set condition, okay, it will call that routine. Okay, so that's why VICT VECT address 0. Then VIC VECT CNTL 0. CNTL है यहाँ पर 0. Okay, 0 is because here we are going to handle port 0. If it is for port 1, so that's why it will be 1. So VIC VCT CNTL कंट्रोल. ओके, तो इसका मीनिंग रहेगा आपको यहाँ पर. ओके, वेक्टर कंट्रोल रजिस्टर, राइट? सो दैट्स व्हाई थर्ड वन है इसमें. इस स्लाइड में थर्ड जो पैरा है वेक्टर कंट्रोल रजिस्टर. ओके, और दूसरा है वेक्टर एड्रेस रजिस्टर. ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं. सेकंड में बताता हूं. पहले वेक्टर एड्रेस रजिस्टर. ओके, इसको शॉर्टली कहा जाता है VIC VCT ADDR0. ओके, जो लास्ट हमने थर्ड लाइन देखा ना, तो वेक्टर एड्रेस रजिस्टर आर यूज्ड टू होल्ड एड्रेस ऑफ द ISR of the 16 vectored IRQ slots. Okay, so it will help you to hold the address. Okay, so it will be that's why we have passed that address. Okay, if slot 0 is assigned to timer 0 IRQ, then the address of the interrupt function must be assigned to VIC vect address 0, right? तो आपको वहां पर इस पर्टिकुलर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ना यहाँ पर. ओके, सो जो थर्ड लाइन है यहाँ पर IRQ यूनिट में थर्ड लाइन. ओके, इसमें आपने लिखा है ना ISR हैंडलर एक्सटर्नल इंटरप्ट 3. इसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर असाइन होगा, राइट? अभी नेक्स्ट वन देखते हैं वेक्टर कंट्रोल रजिस्टर. वेक्टर कंट्रोल रजिस्टर आर यूज्ड टू असाइन स्लॉट्स टू डिफरेंट इंटरप्ट सोर्सेज दैट आर क्लासिफाइड एज IRQ. There are 16 vector control register and each register control one of the 16 vectored IRQ slots. VIC vect control 0 has highest priority while the VIC vect control 15 has
the least priority. Remember. So that's why we have used it as a CNTL 0, right? The first 5 bits in the vector control register from bit 0 to bit 4 contain the number of interrupt requests. Okay, the fifth bit is used to enable the vectored IRQ slot. The following table are used to show the interrupt sources and corresponding source number in decimal format. Okay, yet I have not copied that table, but I will show you it as I am going to tell you about the interrupts. Okay, so here this is about that vector control register, and the last one that is listed here, that is VIC INT enable. Okay, चलिए यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है ना VIC INT enable. Okay, तो ये क्या है? Okay, it is a use for interrupt enable register. Interrupt enable register is used to enable the interrupt that can later contribute to either FIQ or IRQ. Okay, so that's why here it is used. Okay, when a bit is set to 1, the corresponding interrupt is enabled. Okay, as this is a read or write register, when this register is read, one indicate that the external interrupt request or software interrupt is enabled, right? Getting everyone? Okay, so that's why this particular code is written with these 5 lines. Okay, here you have here it is mentioned that 0x to 0 or symbol is given with 0x11. Okay, so that's why here it is given for the ORing operation with your specified total port line. Okay, so that's why we are going to enable that particular lines. Okay, similarly here that line is enabled with this particular star VIC INT enabled. Okay, now the main function is given in the bottom. Okay, INT main void. Okay, तो यहाँ पर आपको दिया है star IODR 0 is equal to 0xFF 0000. Okay, this code brings to enable. Okay, this code is given to enable the 7 segment. Okay, then IRQ init, that routine is get called. Okay, then q underscore printf, very simple. I already told you that this is related with your hyper terminal. Okay, so that's why हम मेन में है या इंटरप्ट सर्विस रूटीन में है, ये इंडिकेट करने के लिए q अंडरस्कोर प्रिंटफ का यहाँ पर यूज किया है. ओके, तो जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो मेन रूटीन में प्रोग्राम यहाँ प्रेजेंट रहेगा. Once you introduce the interrupt, immediately the program will goes over the interrupt routine and display the code 0, 1, 2 up to F over the 7 segment, and in between you can see main as well as interrupt as well as press the switch again. This message you will see over the computer, but you need to open the hyper terminal. Okay, so this is a very good experiment. Okay, so I will show you, I will give you demonstration of this experiment over the kits. Okay, as I go to the college. Okay, I will show you that demonstration. I will take its video and attach with this explanation. Okay, so I think this information will be enough for your understanding. Okay, and this is an experiment related to the interrupts. Okay, I think it's a time for quitting this video. So remember, this experiment was related with the interface 7 segment display using interrupt signal. Okay, so thank you very much for watching this video. Give your attendance in the comment box. Okay, as well as share this video with your friends also. Okay, it will give you information about the use of the interrupt signals, right?